Hello students, I hope you all are fine. Today we will start chapter 3 subtraction of two-digit numbers. Firstly, we should know what is subtraction. We subtract when we have to take away some quantity from another quantity. हम subtract तब करते हैं जब हमें किसी अन्य क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी लेनी होती है. The value of something is going to reduce by a given amount. या हम कह सकते हैं सब्सट्रैक्शन वे वैल्यू है जो किसी दिए गए अमाउंट में से घटाने पर प्राप्त होती है. द साइन ऑफ सब्सट्रैक्शन इज रीड एज माइनस. सब्सट्रैक्शन के साइन को माइनस कहते हैं और इस टाइप के साइन से शो करते हैं. टर्म्स यूज्ड इन सब्सट्रैक्शन. फर्स्ट इज सबट्राहेंड. सबट्राहेंड इज द नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड. सबट्राहेंड वे नंबर होता है जिसे सब्सट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड इज minuend. Minuend is the greater number from which the smaller number is subtracted. Minuend वो बड़ा नंबर होता है जिसमें से छोटे नंबर यानी सबट्राहेंड को माइनस किया जाता है. थर्ड इज डिफरेंस. डिफरेंस इज अनदर वर्ड यूज फॉर सब्सट्रैक्शन विच मीन्स द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स. दो संख्याओं को घटाने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे डिफरेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 28 minus 5. 28 is minuend and 5 is subtrahend. 28 minus 5 equal to 23. So 23 is the difference. Here are some subtraction facts. First is when we subtract 0 from a number, the value of the number does not change. जब हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर चेंज नहीं होगा. For example, 5 minus 0 equal to 5. So answer will not change. The answer will be same 5. Same as 98 minus 0 equal to 98. The number will not change. The answer is 98. Second is when we subtract the number from itself we get 0. जब हम किसी भी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगी. For example, 17 minus 17 equal to 0. Same as 156 minus 156 equal to 0. Third is when we subtract 1 from a number, we get the number just before it. जब हम किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उससे पहले वाला नंबर प्राप्त होगा. For example, 29 minus 1 equal to 28. Same as 137 minus 1 equal to 136. Subtraction with regrouping. Firstly, we will learn how to perform subtraction of one-digit numbers from two-digit numbers. यानी 2 डिजिट वाले नंबर जिनमें टेंस वंस दोनों दिए हों उनमें से 1 डिजिट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना. 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स यानी 2 डिजिट वाले नंबर में से 2 डिजिट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना. Subtraction of 1-digit numbers from 2-digit numbers with regrouping. So we learn with the help of example. Rohit has 23 candies. Sarah asked him to give her 8 candies. How many candies will be left with Rohit? Rohit has 23 candies. So 23 is the 2-digit number. So we'll write 23. Sarah asked him to give her 8 candies. It means 8 is 1-digit number. So we'll write 8 in ones column. Now we will subtract this. Firstly, subtract 8 from 3 in the ones column. But 8 is bigger than 3. So we cannot subtract. So now we will borrow 1 from 2 in the tens column. तो हमने 2 से 1 borrow ले लिया. तो हमारा 3 नंबर 13 में कन्वर्ट हो गया. Now we'll subtract 8 from 13. 8 from 13 equal to 5. So we'll write 5 in ones column. We are left with 1. So 23 minus 8 equal to 15. Subtraction of 2-digit numbers from 2-digit numbers with regrouping. So there is another example.
Ajay had 25 red and green marbles. Out of them, 18 marbles were red. How many marbles were green? Total number of marbles equal to 25. So we have write 25 and red marbles equal to 18. So we have write 18. Now we will subtract this, but 8 is greater than 5. We cannot subtract 8 from 5. We borrow 1 from 2 in the tens column. 2 in the tens column become 1. And 5 in the ones column become 15. Now 15 minus 8 equal to 7. So we have write 7 in the ones column. 1 minus 1 equal to 0. So we have write 0 in the tens column. So there are 7 green marbles. Subtraction without regrouping. Now we learn how to perform subtraction of 1 and 2 digit numbers from 3 digit numbers. यानी 3 डिजिट वाले नंबर जिनमें हंड्रेड्स, टेंस, वंस तीनों दिए हों उनमें से 1 एंड 2 डिजिट वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना. 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स यानी 3 डिजिट वाले नंबर में से 3 डिजिट वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना. Subtraction of 1 digit numbers from 3 digit numbers. We will learn with the help of example. Subtract 5 from 376. So we'll write 3 in the hundreds column and 7 in the tens column and 6 in the ones column. And 5 is 1 digit number. We will write 5 in the ones column. Now we will subtract this. 6 minus 5 equal to 1. We will write 1 in the ones column. After that we will subtract in the tens column. We have no digit to subtract from 7. So we will write 7 in the tens column. Same as there is no digit to subtract from 3. So we will write 3 in the hundred columns. Subtraction of 2 digit numbers from 3 digit numbers without regrouping. For example, out of 145 children in class 2, 10 children were absent. How many children were present? So total number of children 145. Number of children absent 10. Firstly we will subtract in the ones column. We subtract 0 from 5. We get 5. So we will write 5 in the ones column. Now we will subtract in the tens column. We subtract 1 from 4. We get 3. So we will write 3 in the tens column. After that we will subtract in the hundreds column. We have no digit to subtract from 1. So we will write 1 in the hundreds column. Subtraction of 3 digit numbers from 3 digit numbers without regrouping. For example, Radha bought an ice cream for rupees 120. She gave rupees 150 to the shopkeeper. How much money did she get in return from the shopkeeper? So money given to the shopkeeper equal to 150 and cost of ice cream equal to 120. Now we will subtract 0 minus 0 equal to 0, 5 minus 2 equal to 3 and 1 minus 1 equal to 0. Subtracting a number from the same number gives 0 in the place of tens and ones. अगर हमें टेंस एंड वंस के कॉलम में सेम डिजिट में से सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है तो हम वहां पर 0 लिखते हैं. जैसे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0. बट यही कंडीशन अगर हंड्रेड्स के कॉलम पर है तो हम 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि किसी भी डिजिट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर हम 30 से पहले 0 राइट करें तब भी ये 30 ही पढ़ा जाएगा. इसलिए हमें हंड्रेड्स में 0 राइट करने की जरूरत नहीं होती. वेरीफाइंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन. A shopkeeper has 185 notebooks to sell. He sold 63 of them. Find the number of notebooks left with the shopkeeper. Total number of notebooks equal to 185. Number of notebooks sold equal to 63. After that we will subtract this. 5 minus 3 equal to 2. 8 minus 6 equal to 2 and 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 का हम 1 राइट करेंगे.
So number of notebooks left equal to 122. After that we will verify the result that it is correct or not. So firstly we will write number of notebooks left 122. It was our answer. After that we will write number of notebooks sold 63. Now we will add this. 2 plus 3 equal to 5. 2 plus 6 equal to 8 and 1 ka 1. 185. If the answer is same as the given total number of books in the question, so our answer is correct. If it is not same, so our answer is wrong. And we should need to do it again. Now we will come to the word problems. We subtract when we know that the answer is going to reduce by the number given. For example, Monu weighs 56 kg. Sonu weighs 30 kg less than Monu. How much does Sonu weigh? Monu weighs 56, so we'll write 56. Sonu would weigh less by 13, so we'll write 13. After that we will subtract this. 6 minus 3 equal to 3. 5 minus 1 equal to 4. So Sonu weighs 43 kg. I hope you have understand this chapter. If you have any problem, you can discuss in live class also. Thank you. Have a nice day.